25,912 crores. The assistance sought for by Honorable Amma from the Government of India, but they have released so far only 1,737 crores only. That amount also distributed by Honorable Chief Minister Amma in a single stroke without any complaints. Now, I sincerely, very earnestly urge the central government to release the remaining fund, because this issue has been raised by Honorable Chief Minister Amma time and again. Please release the fund and do the needful. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for keeping up time. Now, Sri Vishwambar Prasad Nishad. 3 minute में खत्म करना. माननीय उपसभापति महोदय, देश में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जो सवाल सदन में आया है, हमारे नए सचिवाल जी ने और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने रखा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 196 लोगों की जान गई है, 2184 पशुओं की जान गई है। मानव के बारे में तो सही सूचना हो सकती है, लेकिन पशुओं की इनके पास कोई गिनती नहीं है और कृषि की कोई गिनती नहीं है, मकानों की झोपड़ियों की कोई गिनती नहीं है। जब 1952 में आंकड़ा आया था तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 मिलियन हेक्टेयर था और 2012 में जो ये आंकड़ा आया तो 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। बाढ़ क्षेत्र बढ़ा है इसलिए कि मानव सभ्यता नदियों किनारे, झीलों किनारे बसी और ज़्यादातर लोग वहाँ बस गए। मानवर हम बताना चाहते हैं माननीय मंत्री जी के पास, चूँकि दैवीय आपदा कोष सेंटर के पास होता है, चूँकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। आज़ादी कितने साल बीतने के बाद नदियाँ लगातार उथली होती जा रही हैं, उनमें सिल्ट जमता जा रहा है, उसका प्रबंधन कोई नहीं है। जो शहरों में जल निकासी है उसके लिए इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। जब तक जल निकासी सही नहीं होगी, पानी का ठहराव होगा तो अपने आप चाहे शहर हो चाहे गांव हो बाढ़ से प्रभावित रहेगा। जो पूरे देश में करीब 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश से लगा के कई राज्यों में तमाम नदियों ने जो बाढ़ की स्थिति बनाई हुई है, जिसमें नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं, नेपाल सरकार लगातार कह रही है माननीय मंत्री जी कि आप बांध बनाइए, अपना इसका इंतजाम करिए। हमारी केंद्र सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जगे और जो नेपाल सरकार कहती है कि अपना बांध बनाइए, पानी वहाँ से इकट्ठे पानी आता है सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करता है और लाखों करोड़ों लोगों को जो है नुकसान करता है, जन धन की हानि करता हुआ और लोगों की फसल बर्बाद करता हुआ चला जाता है। इसके अलावा मैं पिछले सदन में भी मैंने कहा था, मैं बधाई दूंगा अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय प्रोफेसर रामकुमार यादव जी को कि हमें दोबारा सदन में भेजा। मैंने पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपके पास मानव जीवन को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मल्लाह का बेटा हूँ, फिशरमैन का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक 14 साल का फिशरमैन का बेटा 14 किलोमीटर समुद्र तैर जाएगा, नदी तैर जाएगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और लौट आएगा। उसको अलग से कोई जैकेट पहनने की, सेफ्टी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। समुद्र में 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर मछली मारने चले जाते हैं छोटी सी किश्ती लेकर के। तो आप जो है, हमने मांग किया था कि आप दैवीय आपदा से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए आप इसके लिए नेवी में, आप अपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स में इनका 50% का रिजर्वेशन करिए। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जब तक आप पास ट्रेडिशनल लोग नहीं होंगे तो बाढ़ के समय हाथ खड़े कर देते हैं। जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं उनको आप जल पुलिस में भर्ती कर लेते हैं और जब उनको भेजते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। ये नाव में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, घूम के चले आते हैं। और लोग टीले में बैठे हुए, घरों के मकान में बैठे हुए, पेड़ों में बैठे हुए चिल्लाते रहते हैं। आप वहाँ चूँकि कोई कैमरा होता नहीं, कोई मीडिया होता नहीं, कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि जल पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में, सभी में कम से कम 50% का जो इसका बचाने के लिए अलग से, ये तो अलग से इनका फोर्स, अलग से तमाम रेजिमेंट बने हुए हैं, इनका रेजिमेंट अलग से बना दीजिए बाढ़ के बचाने के लिए। इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि महोदय, इनके पास नावों का कोई बंदोबस्त नहीं है, स्टीमर्स नहीं है, प्लीज कम डाउन। और इनके पास
इनके पास कोई पूर्वानुमान नहीं है Okay. कि वर्षा कब होने वाली, कितनी वर्षा होगी। All right. इसके लिए केंद्र सरकार के पास योजनाएं होनी चाहिए। और मानो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देंगे कि एक दिन में 5 करोड़ वृक्ष लगा के कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में वनों की कटान हो रही है, जिसके कारण ये बाढ़ की जो है आपदा को झेलने के लिए हमारी नदियां तैयार नहीं है। पानी सीधे सीधे जो है तो मैदान क्षेत्र बस्ती क्षेत्र में चला जाता है। ये माननीय मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इन जो हमने प्रश्न रखे इनका उत्तर देने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री तिरुचि शिवा। 2, 3, 4. Forests and trees in urban areas and construction along the river bedside, and urbanization of floodplains have increased to flood, and a study shows that by the end of 21st century, the economic losses due to flood will be manifold. What is the government having, the plans the government is having to address these issues? Neither the people nor the government is taking this issue very seriously. And second is, this flood and other things are caused by two things, one by natural calamity, another by way of mismanagement. As my colleague, comrade Raja pointed out, either we discuss about drought or about flood. One part of the country is affected by the flood and the other part is affected by the drought. This could be rectified. We have been telling for long that linking of rivers alone would put an end to this issue, but that has not been taken seriously also. At least the southern side rivers could be linked, which would save the southern parts of the state, of the country, from being affected by the drought. Water is wasted by way of going to the sea without being utilized in some areas, and some areas are suffering without water. So the government should concentrate very seriously about the linking of the rivers, and so also about the urbanization of the river bedside and cutting down of forests and trees in urbans. So, and one more thing, would the government consider of reviving the compensation part of that? That is, they calculate by way of only revenue unit. Whereas if some of the landowners are affected within a revenue unit, they are not taken into consideration. So I would urge the government kindly consider of giving the compensation not on the basis of revenue unit. People who are affected, either individual or a section of people in a revenue unit, could also be considered. These two things are very, very important, because this way of calculation deprives many people who are affected by way of flood not getting the compensation. Thank you very much. Thank you very much for adhering to time. Shri Veer Singh. 3 minutes. महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। महोदय, पूरे देश में वर्षा के कारण हर वर्ष तबाही आती है, बाढ़ आती है, जिसके बारे में आज माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में काफ़ी बातें कही। महोदय, जब बाढ़ आती है वर्षा के कारण, तो पूरे देश में तबाही आती है, किसानों की फसल चौपट होती है, मकान बह जाते हैं, तमाम धन जन की हानि होती है। ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है। आज जो अभी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट पर जो रोनू तूफान का खतरा है, और पहले चेतावनी दे दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान रोनू की वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं। भारी बरसात और तेज हवाओं के वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और आगे भी और आने की संभावना है। तो इस पर आंध्र प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को पहले से ही सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर राहत पहुँचानी चाहिए। महोदय, उत्तराखंड में हमेशा सबसे ज़्यादा तबाही आती है अधिक वर्षा के कारण और बादल फटने के कारण। जब बादल फटते हैं तो पहाड़ों का भूस्खलन होता है, गांव के गांव खिसक कर नीचे आ जाते हैं, तमाम जानें आती हैं, तमाम जानें चली जाती हैं। तो सरकार को इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए, और जो ऐसी जगह गांव बसे हैं जहां पर खतरा का निशान है,
पहाड़ों पर तो उन्हें वहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसा देना चाहिए। कम से कम इससे ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। महोदय, जो उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं और उन पर जो बांध बने हैं, जब ज़्यादा बरसात होती है और बांधों में ज़्यादा पानी आता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो मैदानों में भी बाढ़ आ जाती है और मैदानी भाग में बाढ़ आने से किसानों की बहुत बड़ी हानि होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मवेशी मारे जाते हैं, जैसे कि आपने आंकड़े बताए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनको राहत सहायता मिलती है महोदय, समय पर नहीं पहुंचाई जाती, बहुत देरी से पहुंचाई जाती है। जिसका घर बर्बाद हो जाता है तो उसको रहने का ठिकाना नहीं होता है, तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए। और हमको मालूम है कि पूरे देश में ऐसे बहुत से नदियों के किनारे लोग बस गए हैं, जैसे दिल्ली में यमुना के किनारे पर बहुत से लोग गरीब बसे हैं, तो उनको मकान बनाकर दे देने चाहिए। गरीबों को अलग से व्यवस्था करके, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने मान्यवर श्री काशीराम गरीब आवास योजना चलाकर गरीबों को लाखों मकान देने का काम किया, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी, केंद्र सरकार को भी पूरे देश में चिन्हित करके गरीबों को अलग से मकान देने चाहिए। इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है कि पूरे देश में जो नदियों के किनारे जितने भी शहर बसे हैं, आज भूमाफियाओं ने उन पर कब्जा किया है, नदी की जमीनों पर, और वहाँ कॉलोनियाँ बसा दी हैं और उसको बड़े रेट में बेचा जा रहा है। उन नदियों की जमीन को घेरा जा रहा है। जब बाढ़ आती है, डामों से पानी छोड़ा जाता है, शहर में के किनारे पानी आता है जहाँ पर आबादी बस गई है, तो पूरी आबादी में पानी हो जाता है और जनधन की नुकसान हो जाता है। इसका सर्वे किया जाना चाहिए, पैमाइश करानी चाहिए कि नदियों की कितनी चौड़ाई थी, आज चौड़ाई घट करके बहुत कम हो गई है और नदी की जमीन में मकान बन गए हैं। उससे काफी हानि हो रही है। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो गैर मौसम बरसात होती है या हानि होती है, तो जो मुआवजा दिया जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में गैर मौसम बरसात हुई थी 14-15 में, और किसानों को जो गेहूं की फसल का मुआवजा दिया गया था वो आज तक भी नहीं बटा है। मुश्किल से 25% किसानों को मिला है, 75% किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अहमद हसन, confined to 3 minutes. Sir, this calling attention is really regarding a very serious issue for our country and for our people. Last year, India, according to international estimate, last year India lost $3 billion for this flood. Sir, I have a few specific questions for the Honorable Minister. My first question is regarding flood management program. The former Planning Commission laid down flood management programs in consecutive 5-year plans. Now that the Planning Commission has been dissolved, what is the status of this program, and has the government introduced any new protocol to improve it? My second question for the Minister is regarding compensation criteria. When cyclone Common hit Bengal, the state government had the foresight and initiative to set up 3,000 relief camps across the 12 affected districts, giving shelter to 214,000 people. However, in the allocation of funds to the state government to mitigate damages caused by a natural disaster, preemptive measures and the cost thereof is not taken into account by the center. The amount of compensation is only based on the number of lives lost. Sir, we had raised this in the previous session of Parliament as well. I would like to ask the Minister whether the government will consider this while deciding on relief packages, especially since it will incentivize and greatly support states in taking proactive and necessary steps to control damage caused by the such disaster. My question number 3 is, what steps are being taken to strengthen existing institutions that handle disaster in the country?
In the winter session, we had raised the issue of the National Disaster Management Authority, in short NDMA, being ill-prepared to handle disasters. This was clearly mentioned in a report of the CAG or CAG. Similarly, the National Disaster Response Force has also been reported to be ill-equipped, and the funds allocated to it have remained grossly underutilized. The NDMA has set up in 2005 and the NDRF in 2006 after nearly 10 years. Why is the government complacent in dealing with disaster, considering that our country is often plagued by natural calamities? My question number 4 is regarding coordinated approach in dealing with disasters. Flood disaster and its impact on the lives of people, infrastructure, and the economy of the state is a multi-pronged issue. It would therefore require the combined effort of Finance Ministry, Home Affairs Ministry, Water Resources Ministry, and even the Agriculture and Farmers Welfare Ministry. Has the government taken any steps to devise an integrated interministerial approach, not only through meetings, but for actual groundwork? Or would the government considering building an interministerial mechanism which will work along with the concerned state governments and be activated on receiving reports of flood? Thank you, sir. You be here. Okay. Now, see, Sri Sharad Yadav is not here. Honorable sir. Now listen, now honorable members, I have 5 more names. Let me. Sit down, I am going to say something and you don't want me to say. You are not allowed to sit down. You are always doing this. Sit down. You are not allowing me to say. Sit down. Sit down. I am telling you, sit down. You don't want me to say. You say, nothing will go on record. Not allowing me to say. This is very bad. See, honorable members, I have 5 more names. But party-wise names have been exhausted. We have, in fact, only 1 hour for this. Yes, we can stop here. I can ask the minister to reply now. But however, since the subject is that important, I am ready to allow these 5 members also, but they should not take more than 2 minutes. No, not 1 minute, I am having 2 minutes. No, whatever name is there, no. If the name, I cannot violate the convention and the rule. If the name is here, I will allow. No new name. No new name. You could have given the no consideration. So 2 minutes. Ananda Bhaskar Rapalu, 2 minutes. 2 minutes. That cannot be. Respected Deputy Chairman, gratitude for a chance to call attention of the Union Government on the flood preparedness of the nation. With the statement of the Minister, we could understand that India is not prepared. We are far from preparedness for the flood management. It is admitted that by the end of June, more than 70% of the rainfall has been recorded in India. More than 70% of the area has either excessive or normal sufficient rainfall. And monsoon is having the direct immense influence on the economy. Since this is having the diversified impact on the economy and its subsequent necessities, this is a multidisciplinary discussion which is supposed to take place. But the Union Home Ministry is addressing this as just the disaster management program, wherein in India we have seen the Delhi floods, globe has seen the Paris havoc, and even in my remote Telangana where rainfall is very less, at a place called Palakurti of the Warangal district, recorded 12 centimeters rain at a stretch within 3 hours. This is going to have a larger ramification because we are in the climate crisis. We are in the climate complications. So, since we are seeking the global climate justice,
we need to understand the impact of the environment and the climatic My God, complications. this is not the time to say all this. You put your question Yes, about yes, Telangana. sir, I am asking for the attention of the global complications. Okay. See, there is El Nino, and the scientists are telling that we have crossed El Nino. What was El Nino? El Nino is called a little boy. That is the warm event which is going to be the drought. India has undergone the drought. Now it is called the La Nino. What is La Nino? La Nino is little girl. That's little over. girl is having the Yes, cool your environment. time is over. This is called the flood environment. Your time is and over. Sri Bhattacharya. Our preparedness No, is Sri far Dilip from Turki. away. Your time is over. Time is over. Now, after Dilip Respond Turki. to this Bhattacharya ji. climate crisis. Thank you very much. After Dilip Turki. Bhattacharya ji, sit down. Bhattacharya ji. Yes. After Dilip Turki, you sit down. I call him. Then I will call you after that. Dilip Thank you, Turki. sir. Yeah. हमारा देश में लगभग 13 से 14 स्टेट जो कि नेचुरल क्लाइमेटिक और फ्लड एरिया स्टेट्स हैं जहां पर फ्लड्स या नेचुरल क्लाइमेटिक साइक्लोन होना स्वाभाविक है। 250. एक्सीडेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी भेजते हैं। हाई पावर कमेटी वहाँ आने के बाद मेरे ख्याल से 3 टाइम्स मीटिंग करने के बाद रिकमेंड करते हैं, जो कि काफ़ी देर हो जाता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट मीटिंग में उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए। कई सारे राज्यों में नेशनल क्लाइमेटिक का सेपरेट मंत्रालय है, इसलिए मैं डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहूँगा, होम मिनिस्टर कहना चाहूँगा, होम मिनिस्टर के अंदर में काफ़ी सारे इश्यूज सब हैं, सिक्योरिटीज प्रॉब्लम्स बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए इसके लिए तुरंत रेस्पॉन्स करने के लिए विद इन 15 डेज के बाद रेस्पॉन्स करने के लिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए सेपरेट मंत्रालय बनाया जाए, ताकि जो भी नेचुरल क्लाइमेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुरंत सॉल्व किया जाए। हमारे उड़ीसा में कई सारे प्रॉब्लम्स हुआ, हुड़हुड़ या फैलिन, काफ़ी देर लगे फंड देने में, तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा इसके लिए सेपरेट मंत्रालय बनाया जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ श्री भट्टाचार्य। Opportunity to visit 2-3 states after the devastating flood, that is Odisha and Andhra Pradesh. We had a long discussion with the district administration and others. Here the Honorable Minister has said, apart from providing the logistic support, the Government of India supplements the efforts of the state government by existing the financial assistance to the State Disaster Response Fund and the National Disaster Response Fund. Sir, these two funds are working, and all these two funds practically has nothing to do with these things. Sir, let me explain you just for a minute. My question would be to the Honorable Minister, can you tell me what is the use of this State Response Fund and Disaster Response Fund functioning? When your people are going there, your officers are going there, the state government officials are making suppose 3,000 crore, but your people are so pandit, they are so knowledgeable person. They say no, it is 1,000 rupees. What for and why? How much they are knowledgeable, please let me know. Please you inform it to the House, how far they are knowledgeable than that of the state government officials. These state government officials are coming to your office, MHA, and after that when you are sending them, their responsibility is to cut the throat. Why all these things are going on? Sir, second question is, here is a disaster management, sir. What is the functioning of the disaster management? Whether the government has any idea or any thinking
to abolish this disaster management or to change this disaster management act. Otherwise, I tell you, sir, with the complex, all these things, constantly from this file to that file to that file, ultimately the people are suffering. I had been to the village of Andhra. I have seen what is the devastating condition they had. And after the 1.5 months flood, nothing reached there, nothing. Huge number of the people came and surrounded us. They said to us, the government of Andhra and the Telangana, they have supported them, but the government of India, they are not getting anything. Then what is the use of keeping these two white elephant? Okay. I do not know. All right. Thank you. Sri Ripun Bora. Sir, I will confine only on 2 minutes. My first question is, in the report, a statement, how Home Ministry is serious and sincere. The one example is, sir, in 2014, there is devastating flood in Assam, and the central team visited to see the damages only in the month of February 2015. That is after 8 years of devastating, and there is no scene of flood damage. So this is one. And second thing, so far the NDRF Jawans are concerned, in our Assam, there are very less number of NDRF Jawans and less number of boats. They cannot attend all the calls. No. Even from one district to 2-3 districts, the NDRF Jawans are posted in between 2-3 districts, not in each district. So when their emergency arises, the NDRF Jawans, it takes to reach more than 72 hours to reach the place of occurrence. So this is one. And my third question is, sir, that in 2014, when there was devastating flood, after coming the BJP government at center, our state government has given the demand for rupees 25,015 crores. But the center has given only 250 crores, which is nothing, which is a very, very meager amount. So this is the approach. Now here in this statement we have seen the most of the statement covered only about the background of the flood, only of the causes of the flood, but there is no remedial measures. What is the precautionary measures central government is going to take to stop the occurrence of the flood? So from this statement, it clarifies that center is not serious about the controlling of the flood. And my last question is, sir, during UPA government, our government has taken a decision to control the flood and erosion in the entire northeast region. There was an authority, Northeast Water Resource Authority. But after coming the NDA government, the NDA government has stopped this, that it should not be formed. They advised to form another organization, another authority, that is Brahmaputra Basin Development Authority. Accordingly, sir, state government submitted all papers, but 2 years have passed. Now 2.5 years has passed, center has not given approval to this Brahmaputra Basin Development Authority. So my now humble submission through you to the Home Ministry, the Home Ministry will take action for controlling of flood and erosion of Assam. Okay, thank you. Thank you. Sri Shailesh Yadav ji. राजन जी, मैं संक्षेप में ये अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक नई संस्था का जो गठन हुआ है तो कदम ये ठीक, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको विस्तार करने की ज़रूरत है। ये हालात देश में और दुनिया में इतने बिगड़ रहे हैं, मौसम और सारा वेदर और सारा एनवायरनमेंट इतना बुरी तरह से प्रभावित है कि किस समय समुंदर से आफत आएगी, किस तरह नदी से आफत आएगी, किस तरह से सूखे से आफत आ जाएगी। यानी ये एनडीआरएफ जो बनाया गया वो तो ठीक कदम उठाया गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज देश में ज़रूरत ये है कि इसका एक विभाग जो है वो बिल्कुल अलग बनना चाहिए और उस विभाग के साथ सारे मंत्रालयों का एक ऐसी समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
की जो राहत है, मैं जानता हूं कि कोसी में जब बड़े पैमाने पर राहत आई थी तो प्रधानमंत्री जब उस समय मनमोहन सिंह जी थे आदरणीय, मैं 4 बार उनसे मिला, तब कहीं जाकर के थोड़ी बहुत राहत मिलने का काम हुआ था। आज जंगल खत्म हो गए, पशु पक्षी खत्म हो गए, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो हिंदुस्तान ने, दुनिया के इंसान ने बर्बाद और तबाह कर दिया। इसलिए बहुत बड़ी तबाही हुई है। जो अभी 14-15 सूबे हैं और फसल तो चौपट हो गई। सबसे बड़ी बात जो है वो आपने फसल बीमा कहा है, इसका टेस्ट तो अभी हो जाना, यानी आसाम से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर बिहार में सारी नदियां खतरे से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान जैसा सूबा है जिसमें पूरी तरह से यानी एक पूरा इलाका, उसकी जो डैम है वो पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तो गजब हो गया। वहाँ तो जो है वो उत्तराखंड की तो ऐसी त्रासदी कि हर बरस उत्तराखंड जो है वहाँ जो धार्मिक टूरिस्ट जाते हैं वहाँ उनकी जान फंस जाती है, वहाँ के लोकल लोगों की जान फंस जाती है। ऊपर से ये बिजली गिरती है, उससे लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मौत होती है। उत्तर प्रदेश में बुरी हालत है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में अभी हमारे मित्र बोल रहे थे। यानी उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि NDRF अकेले से काम नहीं चलेगा। हर तरफ जो है वो ऐसा संकट आ जाता है कि ये इसका NDRF जो है वो इसका ये संस्था जो बनी, इसका समय भी बहुत अभी 2-4 साल हुआ है, वो सक्षम पूरी तरह से नहीं बन पाई। इसका मंत्रालय अलग बनना चाहिए, तभी इस तरह की परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से निपट सकते। यही मेरी विनती कि सरकार इसको गंभीरता से ले और एक विभाग अलग से इसके लिए बनाने की जरूरत है, और सारे मंत्रालय कैसे इसमें समन्वित करने के साथ आगे बढ़े, यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।